So you see, what is the take-home point here? The take-home point is not just for our departed fathers and ancestrals, but even for our own good and happiness, we must perform Shraddh in these days. Let us talk about Maharishi Sumant, a great sage who went on to say something what is there at the bottom of your screens. So the shloka goes on to say that there is no other activity better than performing a Shraddh, and hence one must attempt to engage in performing Shraddh in whatever way possible. So, dear devotees, our sages and saints and acharyas have emphasized very strongly upon this point. It is quite a bit natural that you may come up with a query of something of this sort. So the query can be that, okay, Shraddh definitely has so much of significance, but what would happen if we do not perform Shraddh at all, if we do not offer oblations to our departed fathers? You see, if you do not perform the Shraddh, if you do not offer oblations to your ancestors, then you see, it brings pain to both the departed souls as well as the persons who are supposed to be performing Shraddh. The Shastras go on to say that you see, as a person dies, all the arrangements are usually made by the people around him. You see, the people are full of grief at that point of time. So, at the time of death, there is not much of a limitation of rituals being performed. So, the rituals are usually performed at the time of death. But eventually, you see, there is some sort of negligence which might be witnessed. So, you see, as a person dies, the messengers of Yamdev goes on to take this person 99,000 yojan deep into the earth. And in this travel, this person cannot even have water or pind. And that is the reason, by way of pind dan and by way of offering water, his children goes on to make such an arrangement. You see, this has very well been mentioned in the Garun Puran. So immediately, as a person dies, he has to engage in the journey of a lok. From Prithvi lok, this person has to travel to the Pitru lok. Imagine, as we all travel, you know, on the earth, how much do we carry? And on top of it, imagine a Gujarati person, you see, how much eatables does he carry with him? A Gujarati would carry so much of eatables as if a village is required to be fed too. So we try to keep immense arrangements for food as we travel on this earth. And when an individual dies, when a person dies, he has to travel from one lok to the other, that is from Prithvi lok to the Pitru lok. And this distance is 99,000 yojans.
You see, it goes on for 12 to 13 days. उसे चलाकर लेकर जाता है और उस समय प्यास भी लगती है भूख भी लगती है And तो क्या as this लिखा है person कि travels from the लोकांतरे earth to तोयम the Pitrulok, लभन्ते न he अन्न undergoes एवच thirst, he जब undergoes लोक का hunger, उद्धार करना होता है जब जीवात्मा को लोक की यात्रा करनी होती है तो न लभन्ते लाभ नहीं होता उसे प्राप्त नहीं होता क्या तोयम पानी और अन्न एवच और अन्न and as this person किसी travels भी from earth प्रकार to का पानी और Pitrulok, अन्न नहीं he मिलता does not get any water इसलिए or उनका any स्वजन food. जब उनकी मृत्यु होती It है is तो for अपने this परिजन reason होते that हैं when भोजन की his व्यवस्था family बनाते हैं members होता ना वो tries to make उनके arrangement for उसके food by way विवाह of पानी देते pind हैं और अलग and अलग also चीजें करते हैं water जो by way समाज of में होती हैं rituals like तो ये the व्यवस्था tail of a करते हैं cow, etc. मरते So समय the family अब ये members तो tries to धर्म make such an व्यवस्था arrangement. हमेशा अब उसके वंश के लोग जो मर चुका है जीवात्मा जो गया है The person who ये has धर्म left है this उसके material उनके world, वंश वाले और his धर्म family न members और यदि go on न to करें offer तो such a वंश के things उसके वंश में जन्म just लेने in वाले case उनके his पुत्र family पौत्र जो भी members यदि उनको or his शुद्ध होने पर grandsons and तर्पण न granddaughters करे do not offer तो him ते water व्यथाम and वो बहुत food. दुखी होते हैं In such a situation, पितृदारुणाम such sons, बहुत grandsons, and लापरवाह होता है बड़ा granddaughters कष्ट होता है उन पितरों would को undergo और उस कष्ट भरे दिल से a वो आह्लाद situation करते हैं कि मैंने of मेरे a बच्चों को इतना पाल strong रखा इतना किया ये लोग कम से कम curse पानी भी नहीं from दिए the भोजन departed भी नहीं दिए souls. The departed एक बार souls, when they're भोजन not का offered पानी कर दो water or बेचारे food, पितरु अपने हाथों से they भी दे undergo सकते हैं immense दे pain सकते हैं लेकिन बेचारे मरने के बाद and उनसे कहीं से भी agony. नहीं And it मिलेगा is because of केवल pain and agony मनुष्य that strong जिनके वंश में curse is जन्म हुआ hurled है by वाले these लोग ही दे सकते हैं ancestors, departed ancestors, तो उस upon मार्ग the में sons, खाना grandsons, पानी की व्यवस्था grandchildren, हमें etc. हमें करनी पड़ती है और फिर पितृलोक में अनेकों अनेकों Hence, वर्ष it is our तक रहते bounden हैं duty that we वहां must कोई make भोजन पानी की an व्यवस्था नहीं arrangement हाँ उनके for the वंशजों food को and यदि water for साल their में एक travel. बार जब ये पितृ पक्ष आता है Now, once they're तब in वो भोजन Pitrulok, प्रदान करे तो साल भर वहां पर व्यवस्था also हो जाती है we must make और फिर ये arrangements पितृ क्या करते हैं for food and water जब for their पितृ पक्ष stay आता in है तो वो अपने Pitrulok. मन से इस धरती पर And आते you हैं see, कि during मेरा this बेटा month of श्राद्ध Shraddh, करेगा हाँ? ये if we साल make 2 दिन में हो रहा है offerings अब इस साल to तो our 2023 में तो करेगा ancestors, भोजन की व्यवस्था then you करेगा see और the ये जो arrangements that होते we हैं make for our वो ancestors would पितरु keep बहुत दुखी them होते हैं बहुत दुखी होते हैं a और lift दुखी for the होकर वह entire उनको year, श्राप देते हैं just in ब्रह्म case, पुराण even में श्लोक जो in आपको this दिखाया time जा रहा period, है if oblations are ये not ब्रह्म पुराण offered, का श्लोक है then these नागर ancestors खंड का become too much उन पितरों annoyed को यदि हम and स्मरण नहीं agonized, करें and then they तो श्राप hurl देते हैं क्या कहते हैं curse. पितरस्य शापम And दत्वा this is अपक्षयम mentioned in the form of a shloka, which is there क्या at the क्या करेंगे bottom वो of your हाय screen. व्यक्ति हैं श्राप देते हैं और फिर आप 1 साल न खिलाओ 2 साल 3 साल So चार you साल see, if पांच you साल if you उसके do बाद not जब वो offer खिलाता नहीं है तो उसमें oblations, हावी हो जाते then हैं for तो उस समय sure में the श्राद्धम curse is कुरुते hurled at. श्राद्धम नहीं करते And you see, बहुत the shloka तस्य says, रक्तम just in पिबंती case तो फिर you वो do not लोग offer अपने परिवार के oblations, लोगों का रक्त then पीते the रहते हैं खून पीते रहते हैं ancestors or the departed souls गर्भ go on धारण to feed on the फिर blood उनके of their वंशज family उनके members. परिवार में जीवन भर उनको कष्ट भुगतना पड़ता The है progeny of such और departed फिर उनके souls would undergo जो huge वंशज pain हैं and वो agony बर्बाद नरक from में जाते हैं generation to generation, and such शांति पुराण में progeny लिखा है would कि go जिन्होंने to श्रद्धा नहीं hell. किया This is what is उन्होंने भक्ति mentioned नहीं किया in उसके Markandeya सतयुग Puran. में कभी अच्छे पुत्र का Those जन्म हो ही नहीं सकता who do not offer उसके परिवार oblations में to the कभी departed दीर्घायु हो ही नहीं souls, सकती Markandeya Puran goes on परोपकार to आ ही नहीं say, सकती such a family जिन्होंने can never वास्तव be में पितरों का मंगल किया such a family can never beget शास्त्र a के son. श्लोक में हरि स्मृति में कहते हैं In आप the देख Hari सकते हैं Smriti, हरि स्मृति it में is mentioned something like न this, what is there धर्मवीरा at the जायन्ते bottom of your screens. उस परिवार में कोई वीर का जन्म नहीं होगा In such a न family, no brave shall उस be परिवार में born. आरोग्य नहीं होगा और In न such a मनुष्य family, उसके there पिता shall को be no दीर्घ healthy a संवत्सर person. नहीं जिएगा In such a वीर family बोले shall no अच्छा one श्रेयो
live for 100 years. In what kind of family? In a family where they do not offer oblations to the departed souls. In a family where they do not offer offerings to their ancestors and departed souls. Such a family will always be undergoing diseases and ill health. Further, it is said in the shloka that comes from Vishnu Smriti, those who do not perform oblations, those who do not offer offerings to their ancestors, such a family, such people are for sure bound to go to hell. Now, my dear devotees, it is completely up to you whether you want to perform Shraddh or you do not. You see, as I'm making you understand the significance of performing Shraddh, this in itself is a work of great dharma. You must also make people aware of performing Shraddh. So I'm sure you have heard of Lord Shiva's elder son, Kartikeya. Lord Kartikeya was once engaged in a conversation with his father. Oh, Dad, what is this concept of Shraddh? Why don't you tell me something about it? Then Lord Shiva goes on to answer, oh, my son, Kartikeya, in this material world, when a person dies and his family members, in their memory, if they go on to cook the meals, and these meals we first offer to Lord Krishna, and such a meal should be completely sattvic without any onion, garlic, and it should have tulsi leaves, and it be offered to Lord Krishna. And once this prasad, once it becomes prasad, this must be offered to Brahmins and the Vaishnavas. And when these Vaishnavas and Brahmins have such a prasadam, you see, the departed souls and the ancestors of the family becomes happy and they become pleased. And at the same time, one must engage in Abhishekam of Lord Vishnu. And such Abhishekam water and jal must be taken by themselves again and also be offered to the departed souls. And in this manner, the ancestors and the departed souls are liberated from their state. You see, we are very, very fortunate by the mercy and blessings of Srila Prabhupada that we have got the opportunity to engage in Pitru, Tripti and Pitru, Mukti both. So let us all engage in some Hari Kirtan and proceed further in our Srimad Bhagavatam Katha. All glories to Srila Prabhupada. All glories to our ancestor fathers and ancestor souls. जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री गौरनिताय की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है उपस्थित वैष्णव वृंद का श्रीमद् भागवत कथा के आज इस चतुर्थ दिवस में। और परम सौभाग्य है कि हम सब
यहाँ पर एकत्रित होकर इस पावन पितृ पक्ष के अंतर्गत बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और इसके लिए हम विशेष स्वागत और धन्यवाद करते हैं श्रीमान लाल गोविंद जी का, वे अपना कीमती समय निकालकर हम सबके समक्ष उपस्थित होकर इस प्रकार अमृत चर्चा के माध्यम से अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस भागवत कथा के मनोरथी भक्तवृंद, हमारे श्री रॉय फैमिली तथा सिंह फैमिली, इन दोनों महानुभावों के इस सुंदर मनोरथ के कारण हम सबको यह अवसर प्राप्त हुआ कि ऐसे पितरों के पावन पर्व के अंतर्गत हम सब ये भागवत कथा श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। तो आइए हृदय से इन महानुभावों का तथा श्रीमान लाल गोविंद जी का एक बार हृदय से महामंत्र उच्चारण करते अभिवादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तत्पश्चात हम स्वागत धन्यवाद करेंगे हमारे समस्त इस अमृत चर्चा परिवार के श्रोताओं का, जो कि भागवत कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और साथ ही साथ हमारे YouTube और Facebook के श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि वे सब भी यहाँ पर इस कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। तो आपका स्वागत है। और बहुत ही सुंदर हम कह सकते हैं कि ये भागवत कथा जो है ना, हम श्रवण कर रहे हैं, बहुत रेयर है एक्चुअली। इतनी महिमा पितरों की मतलब सुनने ही नहीं मिलती है, जो कि हम सबको यहाँ पर प्रभु जी श्रवण करा रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षित भी कर रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं प्राय ये कथा श्रवण करके इतने सारे भक्त इनिशिएट कर रहे हैं कि हम भी जो अब तक नहीं किया है उसे हम करें, है ना। इसका अर्थ यही हुआ कि ये भागवत कथा को जीवन में उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुंदर प्रयास प्रभु जी का असफल नहीं है, हम उसे सफल मानेंगे। कि भक्त लोग इससे प्रेरित होकर इस प्रकार प्रेरणा लेते हुए इस सुंदर कार्य में जुड़ते हैं और अपने पितरों के प्रति जो कर्तव्य हैं उसको पूर्णतया निभाने का प्रयास कर रहे हैं। So very grateful to Prabhuji for putting such a wonderful effort that you are inspiring so many of this souls who had no knowledge of this such things. तो धन्यवाद। और बहुत सुंदर ये जो पितरों का पर्व है, जहाँ पर भक्त लोग इस सेवा कार्य में जुड़े हैं, तो हम उनका हृदय से अभिवादन करते हैं। और हम सब भी यहाँ पर तो उन वैष्णव से निवेदन करते हैं कि जो भी अभी भी इस प्रकार जिनके मन में संशय रहा, और हो सकता है आज उनका संशय दूर हो गया, क्योंकि आज प्रभु जी ने इतने प्रमाण दिए हैं। आज की कथा में अभी भी कथा तो चल ही रही है, परंतु ये जो शेष कुछ हाफ एन आवर में हमें प्रभु जी से इतना कुछ श्रवण करने मिला पितरों की महिमा के विषय में, और क्यों करना चाहिए, है ना, क्या स्थिति होती है पितरों की, वो सब इतना वर्णन किया अद्भुत, जिससे कि एक नास्तिक भक्त के अंदर भी ये भावना आ जाती है कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। तो उसके लिए हम हृदय से प्रभु जी का आभारी हैं। और निवेदन है उन सब वैष्णव से जो अभी तक इस कार्य में जुड़े नहीं हैं, तो कृपया आप इसमें अवश्य जुड़े। और जैसे आपको पता है कि हम भी यहाँ पर ये सुंदर जो प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं पितरों के तर्पण का, पितरों के श्राद्ध का, इस विविध सेवाओं का वर्णन हो रहा है। बहुत सुंदर हम यहाँ पर आयोजन किए हैं, और इस आयोजन में आप भी अपने पितरों के नाम देकर उनके बिहाफ में ये जो सुंदर सेवा कार्य हो रहा है उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ये पितृ मोक्ष पूजा जो हम कर रहे हैं प्रतिदिन, साथ ही साथ वैष्णव को भोजन कराना, और बहुत ही सुंदर भागवत पाठ हो रहा है, और सुंदर गौ सेवा, और साथ ही साथ पितरों का ये जो यज्ञ है जो कि आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं अमावस्या के दिन। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसमें अवश्य जुड़िए, और ये जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं उसको यथार्थ करने का प्रयास करें। यथार्थ इन द सेंस, जो भी यदि अभी तक हम नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज इसमें जुड़िए। अपने पितरों के लिए ये सुंदर अवसर है कि वे कामना कर रहे हैं। प्रभु जी ने कहा ना कि पितरु हमसे कामना करते, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, परंतु जब वे नहीं करते हैं तो फिर पितरु क्रुद्ध होते हैं और श्राप देते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनके आशीर्वाद की कामना करें सदैव, है ना। और कहीं ना कहीं यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम यह कथा भी श्रवण कर रहे हैं, और कथा के माध्यम से ऐसे प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं जो बिल्कुल अनुरूप है ना कथा से। और तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी इस प्रकार के सारे कार्यों में जुड़े,
और पितरों की कृपा के साथ आगे बढ़े भक्ति करते हुए। तो ये अवसर भी हमें यहाँ पर मिला है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इसमें अवश्य जुड़ें। और जुड़ने के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आपके पास नंबर दिख ही रहा है आपको यहाँ पर, जो कि है 7567545555। ये नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप भी इसमें अपने पितरों के प्रति कुछ कार्य में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें अवश्य जुड़े। और साथ ही साथ एक और नंबर भी है जहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, +2012150913। इन दोनों नंबर के माध्यम से यहाँ पर जुड़कर आप इस सारे कार्यों में हमारे साथ में जुड़कर हम सब पितरों से उस आशीर्वाद की कामना करें और उनकी कृपा की याचना करें, जिससे कि हम निर्विघ्न भक्ति कर सके और उनकी कृपा के साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। तो सुंदर प्रयास प्रभु जी शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि इतना कुछ श्रवण करने के बाद भी हमारी चेतना में ये चीज नहीं जा रही है कि जिससे कि हम इस प्रकार का इनिशिएट करें कि हम पितरों को तृप्त करने का प्रयास करें। तो प्लीज मेक श्योर करें आप ये अवसर को ना गवाएं और इसमें जुड़िए और अपने पितरों के साथ साथ आप अपना भी भला करें। ओके, तो आशा करते हैं कि आप इस कार्य में हमारे साथ में जुड़ेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे, साथ ही साथ भगवत कृपा भी प्राप्त करेंगे, ऐसी कामना करते हैं। और साथ ही साथ हम निवेदन करना चाहते हैं उन वैष्णव से जो कि कथा के माध्यम से प्रथम बार हमारे बीच में यहाँ पर जुड़े हैं। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप प्रथम बार है और चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की इंफॉर्मेशन हैं जो आपको पूर्व से प्राप्त हो सके, जिससे कि आप हमारे साथ में जुड़े और आने वाले प्रत्येक कथा को श्रवण करें, तो आपसे अनुरोध है कि ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे आप अवश्य नोट कर ले और इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नाम, नंबर और ईमेल तथा लोकेशन एंड 7567567531 यह नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, नंबर, ईमेल और लोकेशन, जिससे कि आप आने वाली समस्त कथाओं को या आने वाले समस्त कार्यक्रमों को यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सके। और इसी के साथ यदि आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LalGovindDas, आप इसे यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ यदि आप सर्च करके इसी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपा करके आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि आप आने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करते रहें अपने यूट्यूब पर। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल को लोगों तक शेयर करेंगे तो वे भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के कथा श्रवण करके उनके मन में भी प्रेरणा हो सकती है श्राद्ध कार्य वगैरह करने की या भगवत कथा श्रवण करने की, जिससे वे भी भक्ति में आगे बढ़ सके। तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज इसे अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी हम भगवान के साथ में जोड़ सके, भक्ति के साथ में जोड़ सके और वे भी इस प्रकार के कार्य के साथ अपने जीवन को धन्य करने का अवसर प्राप्त करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें अवश्य जुड़िएगा। और बहुत ही सुंदर ये भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमान लालगोविंद जी के मुखारविंद से, जहाँ पर इतनी अद्भुत महिमा हमें आस्वादन करने मिले हैं। इसके लिए हम ऋणी हैं प्रभु जी के और धन्यवाद करते हैं उनको कि इतना सुंदर एफर्ट करके हम सबको श्रवण करा रहे हैं ये भागवत कथा। तो पुनः आइए हम अधिक समय ना लेते हुए निवेदन करना चाहते हैं परम पूज्य राधाविंद गोस्वामी महाराज की कृपा पात्र शिष्य श्रीमान लालगोविंद प्रभु जी से कि वे इस चतुर्थ दिवस की कथा को हम सबको श्रवण करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित
भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. I extend my heartfelt thanks and gratitude to all the Vaishnavas who have assembled here. भागवत कथा रसिक भक्तगण दूर दूर से Also, आधुनिक I विज्ञान के extend माध्यम my से heartfelt thanks and warm हमारी हरि welcome यात्रा में to इस the various कथा Bhagavad श्रवण Katha करने वाले premis on different देश platforms के like समस्त श्रोतागण YouTube, Facebook, एवं and Zoom. ये सुंदर भगवत कथा का In आयोजन करने particular, वाले I would want to ऑस्ट्रेलिया welcome मेलबर्न निवासी the host family from श्रीमती Australia, मणिका माता Melbourne, Sri Manika Mataji, उनके पावन पूर्वजों का स्मरण करें तो श्री रघुनाथ सिंह भगवती Sri देवी Raghunathji, Bhagavati गुलजार Devi, सिंह राजेश्वरी Gulzar देवी Singh, Rajeshwari Devi, इनके पिताजी सुखदेव and जी also her father, Sri Sukhdev परिवार Singh, के समस्त are श्री the great कुसुम ancestors of सिंह her family, Sri उनके Kusum Singh, समस्त बाल गोपाल and धनराज all the young, श्वेता loving dear ones, आर्यमान अरुणि उर्वशी Ariman, नंदिनी Aruni, Nandini, etc. साथ ही साथ यूके निवासी Also, from UK, we have our host रूमा रॉय family, माता Sri Ruma Roy Mataji, बाबुल चंद्र रॉय की प्रथम पुण्यतिथि में उनका in पावन the स्मरण loving करते हुए first and समग्र परिवार death को anniversary, रुबेल गोपी मनीषा Roy गौरव family प्रिया for ऋषि Babul Chandra Roy ji. आप सभी भक्त उपस्थित होकर कथा सुन रहे हैं You all have assembled आप सबको here and are becoming a witness श्रीमद् to this भागवत कथा katha. के I extend my चौथे दिवस heartfelt में gratitude and पुनः welcome एक to बार the fourth day's हार्दिक katha स्वागत of एवं आप 376th सभी को Srimad हृदय Bhagavatam katha. हमारा प्रणाम Kindly accept my humble obeisances. Hare हरे Krishna. श्याम श्रीमद् भागवत श्रुतिफल With Bhagavatam श्रीमद् भागवत के Shrutifal. विभिन्न प्रसंग In the different जिसका references श्रवण of Srimad करने से Bhagavatam, पठन करने से and जिनका as कीर्तन we करने से listen, as we क्या read, as we perform प्राप्त होता है Kirtan to such Srimad हम Bhagavatam, सब इस श्रृंखला में we all have श्रवण been करेंगे engaged in this series अब of तक listening जितनी Srimad संख्या की Bhagavatam. चर्चा हुई So far, we have discussed श्रुति 21 फल सप्ताह के references दौरान during आज Shrutifal 22वां प्रसंग Katha. है Today, we are going to be entering into लाल गोविंद दास 22nd reference. परम I'm very मनोरंजक confident you all कथाओं have के समुद्र come में to इस बार connected, हमारे which is the churning of the cosmic ocean. गत कथा का जिन्होंने आयोजन किया था You see, श्री कमनीय the कृष्ण previous katha हम दोनों hosted बैठे by बैठे Sri कह रहे Kamniya थे Prabhu. Kamni Prabhu was asking me, दुनिया में लोग Prabhuji, एंटरटेनमेंट in के this लिए world, मनोरंजन के लिए people of this कभी टीवी material देखते हैं world मूवी देखते हैं watch न्यूज़ TV देख लेते हैं or news सोशल or मीडिया देख लेते television हैं or engage in अपना social media मनोरंजन लिए सबको activities कुछ ना कुछ for their चाहिए entertainment because everyone needs some or the other सबके sort घर of में करते हैं entertainment. प्रकट रूप से करते हैं करते तो Some हैं people do it openly while others engage तो quite वो मुझे पूछ रहे discreetly. थे केयूर So प्रभु Kamne Prabhu or कि Kher हमारे Prabhu, गुरु he was महाराज asking अपने me मनोरंजन के लिए क्या करते थे how our Guru Maharaj used अचानक to मुझे ऐसे engage प्रश्न in, पूछा what activities he बोले used to हम engage in लोग for तो his एंटरटेनमेंट entertainment. कभी कॉमेडी देखकर कभी यहाँ वहाँ कुछ ना People कुछ like me, ये Kher एक Prabhu was saying, अजीब people like स्वभाव है him would see some तो गुरु movies or महाराज के social लिए media handle, एंटरटेनमेंट क्या etc. So, होता what is था entertainment for Guru क्या Maharaj? होता था Since Prabhuji had been in close जहाँ association जब with Guru Maharaj, मुझे what used to गुरुदेव be जी his के source कृपा of से उनका entertainment? एसोसिएशन मिला है So, dear उनके devotees, साथ में हम रहे whatever हैं association I have मैं परम had पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी with महाराज की बात कर रहा हूँ His तो Holiness उनके लिए Radha Govindra सबसे Goswami बड़ा Maharaj, एंटरटेनमेंट था ये समुद्र the मंथन biggest प्रसंग entertainment ये source प्रसंग for Sri Radha गुरुदेव के Govinda लिए Goswami सबसे Maharaj बड़ा was the एंटरटेनमेंट था churning of the cosmic ocean. लगभग Biggest व्यास जी entertainment के for Guru सैनिकों ने Maharaj. ये कथा सुनी है You see, we have लेकिन heard this katha बरसों from बीतकर Vyaspeeth, लगभग
on many occasions, but along with this, whenever we would sit with Guru Maharaj personally, uh, he would deliver this particular katha umpteen number of times. And he would laugh so much as he would speak about this particular reference of churning of the cosmic ocean. So you see, Bhagavad Gita goes on to purifies the heart. It develops your love towards the Lord. At the same time, one of the outcome of Bhagavad Gita is that it goes on to please our heart and gives us a lot of pressure. And you see, on the top of it, if we talk about the churning of the cosmic ocean, it has all the rasas in it. Goswami Tulsidas also towards the end of Ram Stuti has gone on to write, Shri Ramchandra Kripalu Bhaj. What does he write at the end? So Goswami Tulsidas goes on to say something like this towards the end of Ram Stuti. तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे राम Goswami Tulsidas goes on to say how the katha of my Lord Ram is. The katha of Lord Ram goes on to purify the people. But at the same time, the katha of Shri Ram is something that offers entertainment to Ananta Shesh. It goes on to give peace to Devadidev Mahadev. Imagine Devadidev Mahadev, who does not get distracted towards anyone. Such Mahadev gets pleased, gets so much of pleasure by way of Sri Ram Katha. Imagine what this comedy shows. You see what kind of impact it would have on real sadhus and sons. Hardly any of the comedy show would give any iota of pleasure to any of the sages and saints. So you see, the katha of Lord Ram and Lord Krishna goes on to please Lord Shri Shiv. Shaunik Rishi went on to raise a question to Sukhdev ji. That you see, imagine Sukhdev ji. As he was born, he left home. So what does? You see, the impact and magic of katha of Sri Ram and Sri Krishna is. You see, the qualities of Hari, the stories of Katha, the stories of Hari is in itself having so much of potency that anyone who listens it, you see, the heart gets too much of pleasure. So it offers entertainment and pleasure to the heart of such highly elevated personalities. You see, so we were talking about what gives a lot of pleasure to the heart of our Guru Maharaj, or what is the source of
entertainment for him. And it was this particular instance of, you see, the churning of the cosmic ocean. आनंद कराते थे. Guru Maharaj would talk about the latkas and chatkas of Mohini Avatar, etc., whenever he would talk about the churning of the cosmic ocean. समुद्र मंथन सागर मंथन प्रसंग है. 2012 की बात है. So let's talk about मैं प्रथम बार churning भारत of the से बाहर cosmic गया ocean. थाईलैंड की धरती पर. You see, in 2012, I went outside India for the first time to Thailand for narrating Bhagavad Gita. So you see, at Bangkok, there was this huge airport. And I was traveling outside India. I was contemplating what kind of people would be there in Phuket, Pattaya, a place you see where the impact of Kali Yuga is so strong. So my heart had a lot of doubts, concerns, and questions. So as I landed on Swarnabhumi Airport, I came across immensely big statues of churning of the cosmic ocean at the airport itself. The airport itself depicted the churning of the cosmic ocean. And the airport of Bangkok, Thailand was known as Swarnabhumi. And as I ventured onto the roads, I came across the statue of Lord Brahma at every junction almost. So the point is, you see, the world is not wrong or bad, but maybe some people definitely are. So when Guru Maharaj was asked that you went abroad, how did you find the world? Guru Maharaj was like, everything is the same sun, the same moon, the same land, the same ocean, the same rivers. Yes, people are maybe some good and some bad. Anyhow, coming back to churning of the cosmic ocean as the 22nd reference in this Katha. 8th canto, in the 8th canto of Srimad Bhagavatam, from 15th to 22nd chapter, this churning of the cosmic ocean is mentioned. Even Sukhdev Goswami very elaborately mentioned this. So in the 8th canto, from 5th to 12th chapters, this churning of the cosmic ocean is mentioned. In the 8th canto, from 5th to 12th chapters. So you see what kind of Shrutifal is attained. Let us try to understand that. And I would always recommend that this particular reference is meant for business and for job goers. And we all, as businessmen and as persons doing job, must listen to it and make people hear it. ये प्रसंग आप जानते नहीं, प्रसन्न हरि प्रभु एडवोकेट भी हैं और बहुत बड़ी कंपनी के ओनर भी हैं और इसके अंदर में लगभग 400-500 लोग, 400-500 एम्प्लॉय काम करते हैं और 30 बार भी समय निकाल कर इस प्रकार भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं. तो बड़े बिजी हैं और इसमें सबसे बड़ी कृपा इनके बड़े भाई और माता जी की है कि जिससे ये आसानी से भजन कर रहे हैं. इनकी बहन, सॉरी, तो सबका स्मरण करें. तो श्रुति फल, आइए श्लोक के अनुसार हम इस प्रसंग के श्रुति फल, एक श्लोक में श्रुति फल का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 12वें 8th canto, in the 12 chapters, 46 shloka, इस प्रसंग का श्रुति फल बताते हुए Shrutifal gets a mention.
And the shloka goes something like this. एतं मुहुः कीर्तयतो नुशृण्वतो नरीष्यते जातु समुद्यम क्वचित् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् समस्तसंसारपरिश्रमापहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, So Sri Shukdev Goswami goes on to say, एतत् एतत् माने इस मतलब किस, तो किसको, इसको, इस प्रसंग को, किस so प्रसंग, Shukdev Goswami goes on to say that this particular reference, this particular event of churning of the cosmic ocean, मुहु कीर्तयतो, शब्द को ठीक से पकड़िएगा, एतत् इस समुद्र मंथन, सागर मंथन कथा को मुहु कीर्तयतो, कीर्तयतो नहीं है, कीर्तयतो माने कीर्तन करना, इसे बोलना, इसे गाना। समुद्र मंथन की कथा का कीर्तन नहीं करना है, मुहु कीर्तय, मुहु माने बार बार। so अब फिर से this गुरु particular उनके मुख से ये प्रसंग हमने बार बार reference of churning of the cosmic ocean, तो सब कनेक्ट होता है। इस प्रसंग को मुहु कीर्तयतो, बार बार गाना चाहिए, so one must try to sing and kirtan, do the kirtan for this particular reference of churning of the cosmic ocean. नहीं हो जाएगी, ये थोड़ी कोई मूवी है, फिल्म है कि एक बार दो बार देखा तो फिर खत्म, है? इसे जितनी भी बार सुनो, मैं तो गारंटी के साथ आजकल कहता हूँ, So you see, some people might say बार सुनोगे that कुछ नया मिलेगा। will it not become boring if you very often repeat it? I can guarantee this to you, it will never be at all boring. Rather, every time it is spoken and heard, you'll get something new every time. You see new thoughts, new realizations, new understanding. You see, the references of Bhagavatam is not just a normal story. You see, भागवत स्टोरी, it's not at all a story per se. छोटी लगती है, It doesn't have that elaborate, extended sense. It's not an ordinary story. Srimad Bhagavatam is a real big science. And hence, you see, one must engage in doing kirtan of this particular reference of churning of the cosmic ocean. You see, let it be Srimad Bhagavatam or the name of the Lord. The significance is to repeat it ever and ever again. कृष्ण बेचारे थक गए, एक ही चीज, तो भगवान को भी बोरिंग होता होगा, भाई एक ही चीज बार बार अर्जुन को कह रहा हूं, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नित्य युक्त, Imagine Lord Krishna in Bhagavad Gita kept on repeating to Arjun. सततम नित्यम, बारंबार He went on to say Satatam, Nityam, इसी की है, सतत की महिमा, कंटिन्यूटी की महिमा है, because you see the significance is of continuity. You see, the air might appear to be so ordinary. सतत नित्य And किसी प्रेशर के imagine साथ मशीन में भरा जाए तो if बड़े this wind or air सतत की महिमा है, is applied continuously, it can go on to break लेकिन उस हवा even को huge सतत mountains. किसी एक कंप्रेसर के द्वारा जमा किया जाए तो बड़े बड़े पर्वत पत्थर को फोड़ सकती You है, see, फोड़ सकती है। consistently, if air pressure is applied to something, it can go on to break even strong and huge boulders of stones. सो भजन So it is the continuity यहाँ पर समुद्र मंथन which is very significant. So here in this turning of the cosmic ocean, this katha must be repeated. कीर्तन करता
quite often. एक बात कहें, किसी भी कथा को जब बार बार सुनते हैं ना तो उसका My dear प्रभाव धीरे devotees, होने लगता है। you see, ये if बुजुर्गों we के वचन है। keep on repeating a particular गुरु katha, सनारी गुरु गुरु the करे तो impact, मुझे भी वो कैसे चढ़ गई गुरु the वाली। impact कल तुमने गुरु actually गुरु ही किया तो मैं भी अभी वो उस goes ट्रैक पे चढ़ on गया। to go and reach your heart. तो गुरुदेव ने कहा था कि भाई किसी प्रसंग को आप बार बार बोलो, बार बार सुनो तो And उसका you see, प्रभाव this is the तुम्हारे message of ऊपर Guru Maharaj. बहुत गहरा हो जाता है। If you go on इतिहास में to एक कथा repeat the क्या नाम था, katha वॉपदेव। क्या नाम again था? and again, अपने its बच्चों को impact सुनाइएगा ये। goes on to be very वॉपदेव एक strong and नौजवान था lasting on your heart. और पढ़ने In में बड़ा history, you कमजोर था। see, there was this child वो Bob हमारी Dev तरह ढ था। who मैंने एक बार was मधुसूदन प्रभु quite, और कमनीय प्रभु को, एक बार हम लोग रात को बैठे थे who was गुरुदेव ने quite बोला weak in मेरे बारे में studies. सुने, बोला सुनने जैसा नहीं है, I was मुर्गे talking वालों से about ऊपर this to उठते हैं। Kamne Prabhu and Madhusan Prabhu, बोले who आप asked me, पढ़ते what हो ना, about your मुझे भी studies पता at है, मैं तो home? आगे जो एग्जाम I देता था used वो to करता say था, मैं तो I नहीं was करता था। quite weak in studies खैर, and I would never study तो anyhow. So in the history, there पढ़ने में was बिल्कुल this ढ, child, कौन? वॉपदेव। Bob Dev, was एक स्टैंडर्ड quite में weak 2 साल 3 in साल 5 studies. साल He एक would एक कक्षा spend में रिपीटेशन 3 to होता 4 था to कि वो 5 फेल हो जाता था। years in order to get past. उसके गांव वालों को कोई पूछे आप वॉपदेव को जानते हो, सब लोग कहते हैं हाँ मेरे क्लास में पढ़ता था। Just in case if anybody लगभग गांव वाले would सब ask मित्रों थे उसके। anyone in the बाकी village बच्चे आगे बढ़ते if he गए, ये knew सब नहीं Vabdev, he would say, yes, he used to study with me. That means he would study with almost एक दिन everyone क्या हुआ, in the village. स्कूल वालों ने मीटिंग की, सारे Once, you गार्जियन see, the प्रिंसिपल को, entire बोले ये school लड़का यदि अपनी called स्कूल में for a रहेगा meeting हमारी and they स्कूल में decided, नाम just लिखाएगा। in case if this child stays in इसका our लिविंग school, सर्टिफिकेट पकड़ा it पकड़ा will था, दो स्कूल में से एक दिन earn बुलाया, bad बता reputation रहे to our उसको school कभी and we must give him अगर a school कमजोर है leaving तो certificate. हमारी स्कूल का नाम बिगाड़ रहा है। You're not fit to study in our सर्टिफिकेट school. लेकर घर पर कैसे जाए, क्या मुंह Now, लेकर this जाए? poor child, how would he तो reach एक back पेड़ home के with the नीचे school जाकर leaving के, और certificate? बहुत बड़ी खोज, And अब now देखो he एक बार sat एक under गुरुदेव a पढ़ा रहे tree थे बच्चों को with a कि heavy, heavy heart. तुम लोग पढ़ो पढ़ो, पढ़ने लिखने में ध्यान दो। वो न्यूटन, न्यूटन ने ग्रेविटी फोर्स की खोज की, तुम जानते हो कि नहीं? तो एक स्टूडेंट बोला कि न्यूटन क्लास छोड़कर भाग गया था, आप क्लास छोड़ने दोगे तो हम खोज Now, a करेंगे। teacher आप was क्लास telling नहीं करने दोगे तो हम students, क्या खोज oh, करेंगे? students, you should study, see how Newton छोड़ो discovered the छोड़ो, law of हम नहीं gravitation. पढ़ेंगे। The student answered, oh, dear न्यूटन को teacher, भी जब तक क्लास Newton में निकाला नहीं discovered गया, एक the बार law of कसम से gravitation कहना कि after the समाज class, को outside the संस्था class in संप्रदाय school. ये And you लोग never allow us to go जब outside the तक आप class. बाहर नहीं So, dear जाएंगे devotees, तब you तक see, कुछ नया नहीं until खोज and पाओगे। unless you go out of जिन जिन this लोगों ने कुछ world, नया खोजा out है, of this अब मैं नाम नहीं लूंगा, material world, जितने भी हैं you कोई cannot हमारे discover हैं, something new. लेकिन जिन जिन लोगों ने कुछ नया करके दिखाया है, Those सभी who have समाज done वालों ने something new, उनको अलग कर दिया है। they had been और जो कहते sidelined चले by their जाएगा कोई मोटू society, for माणस sure. हमायत नहीं, वो इतना बड़ा हो जाए कि वो छोटे समाज में वो फिट ही नहीं हो You सकेगा। see, उसके such विचार, persons become उसका so अपना huge and संस्कृति elaborate इतनी due to महान their हो जाए mind and कि वो heart छोटे समाज that, संस्था में वो फिट हो ही they नहीं do पाएगा। not fit in such a small conservative society. खैर, Anyhow, मैं coming वॉपदेव, back to our शिल instance प्रभुपाद जी about ने भी इसका Bhakti, जिक्र किया है अपने Srila पृथ्वी Prabhupada में, has also mentioned उसको about निकल this in गया। his purport. This child who was तो thrown हर out गांव of the में कुआं होता school. है ना, हर गांव में एक कुआं होता है। So you see, मैं every इसको छोड़ कर village बेटा, has a well. ऊपर Now, में this सिर poor करके बोला child यार मुझे याद was क्यों नहीं sitting रहता, मैं इतना near a कमजोर well क्यों and हूँ, he was contemplating, why am I so weak in मुझे याद क्यों नहीं studies? रहता। Why don't I remember things? तब उस बच्चे की He was brooding दृष्टि over himself. वो कुएं के ऊपर गई। Now, this पहले के child जमाने में, पहले तो हम got लोग his सब eye पढ़ते हैं fixated कि हर towards गांव the में एक well. कुआं होता था, राइट? So you see, in the earlier time, there और used to पहले be a के village जमाने in में कुएं में every से जल निकालने के village. लिए And to ऐसे draw the बांस water खींचते out थे, of the ऐसे well, खींचते थे। there तो used to अब तो वो be चक्कर a चलती है ना, bucket चक्कर होता है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसे ही which was खींचते थे। drawn on a stone और as कुएं a के बाउंड्री lever होती and थी, उसमें pulley. पत्थर लगे हुए थे, पत्थर से घिस And this घिस के well रस्सी आती थी, would have पत्थर से a घिस stone के रस्सी। boundary. उस बच्चे ने क्या देखा Now, this child कि मेरी noticed रस्सी
that as the rope goes on to wrap the stone and the bucket goes down, and as it is brought up again, the rope rubs against the stone. The stone goes on to break. That is, a rope has power to even break the stone. Ideally, rope does not have the power to break the stone, but if continuously the rope is made to rub against a stone, then even the stone can be broken. Now, for this child, the takeaway point was, just in case if I engage in continuous exercise, I can definitely become meritorious. Now, because this poor child could not go to the school, he picked up Bhagavad Gita and continuously he went on to by heart shloka by shloka, Bob Day. And now, as he completed Bhagavad Gita, he went on to memorize and by heart 18,000 shlokas of Srimad Bhagavatam. Continuously, he was practicing and memorizing. You see, the invaders from outside had gone on to burn our shastras, etc. And when people brooded over, they were lamenting, how do we get our Bhagavad Gita and Bhagavatam, etc.? Somebody said that bring that boy Bob Dev, who has recited and by hearted Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and he started reciting, and people started writing it. 18,000 shlokas of Srimad Bhagavatam, and also, 365 plus shlokas of Bhagavad Gita. Now, a question was shooted to him after this was done. Which school did you go? Which ashram did you go? Then Babdev replied, you see, the school I was studying at, they had thrown me out of the school. Then the question was, how come did you learn all these shlokas without even going to school? It is here that this child answered that continuously, repeatedly, back to back, if you exercise, then definitely you can memorize. You see, nobody is born intelligent, nobody is born with a good memory. One has to exercise out here. If you perform and work hard, then definitely you can achieve this feat. So, in case if somebody delivers the katha of churning of the cosmic ocean, or does the kirtan of this cosmic ocean churning again and again, and if somebody else goes on to listen to this katha again and again, so there are two things: somebody who sings again and again, or somebody who listens again and again. So what is the result? What is the end result a person will get? Number one, then such a person will never be nishfal or a failure or unsuccessful in what? So such a person will never be unsuccessful in any of the business, any of the work, any of the job that a person will be engaged in. So imagine, you see what is the result of this? You see, I can recall what Guru Maharaj, mentioned something about it. Whenever there would be an opening of somebody's office or a company, and I would accompany Guru Maharaj, he would only do two kathas, either Vaman Katha or Samudra Manthan.
गुरुजी जब किसी कंपनी ऑफिस का ओपनिंग करते हैं And तो ये it कथा is होती today that I realize the है। हम लोग देखते significance हैं कि that why would उद्यम Guru Maharaj talk about बिजनेस only यानी these two सेवा में instances, that is क्वचित churning of the cosmic निश्चलेगा ocean तू कभी and भी Vaman विफल नहीं Katha. होगा यदि ये समुद्र मंथन प्रसंग को बार बार गाएगा बार बार No सुनेगा person who listens to कभी this निष्फल katha नहीं होगा। or repeats this katha himself will ठीक है ever be ये unsuccessful in खास his करके business व्यापार or बिजनेस job. करने वालों को हाँ, ये प्रसंग सुनना चाहिए। इस प्रसंग में बड़ी बड़ी सीख है बहुत सारी शिक्षाएं हैं। So you see, this particular जीवन katha में has lot many learnings आचार्यों that we can derive इस for प्रसंग our में daily अपनी life. टीका में बहुत सुंदर लिखा Acharyas have कि commented in their नोपते commentaries. जातु स उद्यम क्वचित इसका अर्थ आचार्य और इसको एलेबरेट करते हैं। So Acharyas go on to elaborate बहुत लोग upon this further that कभी कभी किसी दुकान का ऑफिस का ओपनिंग करते हैं तो उसमें when we go जब on to उन्हीं have a opening वास्तु ceremony शास्त्र या फिर of our office, etc., we चौघड़िया या do मुहूर्त not ये consider नहीं देखते Vastru, Chaugadiya, हैं? etc., और यदि etc. कोई गलत मुहूर्त कोई चौघड़िया कुछ गलत है And just in ग्रह case if कोई there is आगे पीछे है any wrong तो combination आचार्य of लिखते हैं planets, अनेक etc., भगवत then भक्तानाम Acharyas go on तद to फल say प्राप्तो न that देश मुरहुत विघ्न हेतु समुद्र मंथन कथा का श्रवण करने से just in case if the planetary देखो combination is not good, स्थान then you see, उसमें बहुत सारे if you दोष go होते on हैं। to perform, आप अपना घर बनाते हैं listen, or अपनी ऑफिस speak the बनाते हैं churning of है ना the दुनिया दुनिया cosmic की ocean देश बड़े katha, हरिश्चंद्र के then you वचनों see, का ही नाम है Desh means the सत्यवादी बहुत place. प्योर है You see, where you're making लेकिन the जिस office. धरती पर हमारा घर आज है वो घर बनाने के लिए कितने जीव जंतु को मारा गया है उस You see, the place where you might have जंतु had your कहाँ से office नहीं था वो built, or the बताया गया है। place where you आपको might पूरा have समझ में आ had रहा है your हम लोग house दूध के built. धुले नहीं Try हैं। to understand how many आप जिस बाग में insects or रहते how हैं many उस बाग का निर्माण organisms करने में कितनी might चिड़िया have कितने been जीव जंतु killed or कितने might have पशुआं been रहते थे उसको सबको displaced मार कर हटा from कर that आपने आपका place. घर You बनाया have created तो your स्थान में office दोष है or या you've ही है created दोष your office. So तो definitely स्थान का दोष होता है there is this और dosham कभी कभी of ग्रह the place, आगे पीछे हो जाते हैं and sometimes the equation अमुक or लोगों the में ग्रह का placements of the जागरण नहीं planet. होता कौन से कहा शनि डोला काटतो होए मंगल माथे पर बैठा होता है मतलब सारे ग्रह जो है ना बिल्कुल हैं? So it might लेकिन so शिवदेव happen जी कहते that हैं कोई the चीज अगर planets घर में might दोष also be लगती है adversely placed. But तो यदि Shukdev Maharaj goes on to संपूर्ण say, प्रसंग को but कोई need बार बार not worry if पढ़ता है you would या बार बार सुनता repeat है the churning of the cosmic ocean स्थान story का जो again दोष and है वो again, भी दूर or हो that you जाते हैं listen to it again and देश again, काल then you see the और dosh समय of का the जो दोष है place, वो भी दूर that हो is जाता है Desh, and also of इस the प्रसंग time, का that हमें is श्रवण Kal, करता है gets तो nullified. भागवत भागवत भक्ति तो देता ही है भगवत You प्रेम तो see, देता this है is the ईश्वर देता significance है of वो सबसे बड़ी Bhagavatam. चीज है It not लेकिन only हमारी gives love, प्रैक्टिकल लाइफ में peace, हमारी but also हमारे it जीवन helps में us in हम our उस practical प्योरिटी में life. नहीं है तो ये सब बातें Because we're करना not that highly pure devotees, you see, such things definitely आचार्य come का to our aid. कहा कि ठीक है One of the फिर उन्होंने acharyas कहा दूसरी लाइन में has कि न also gone ध्येय on to जातु स write, उद्यम क्वचित कभी भी उनके उद्यम में हैं, निष्फलता नहीं मिलेगी they will never be a भाई भक्तों failure के in their लिए सबसे बड़ा efforts. उद्यम कौन सा है So, what is the biggest industrious भगवान work की प्राप्ति or the devotees of हमारा the तो Lord? धंधा यही है ना So, बाकी what सब is the अपना अपना biggest धंधा industrial होता है वो activity? It फिर वो is आए जाए उससे कोई फर्क नहीं achieving the हमारा सबसे Lord, बड़ा धंधा प्रभु की getting प्राप्ति the करनी Lord, है दैट्स इट है ना वही वही devotional बड़ा service उद्यम है towards the Lord. तो उस That's रूप the से biggest न industrious केवल activity for the संसार फल devotees. हेतुत्वम किंतु मोक्ष हेतुत्वम भक्त को मुक्ति की मोक्ष की प्राप्ति में विफलता कभी नहीं मिलेगी मतलब भक्त सफल हो जाएगा अपने लक्ष्य में अपने उद्यम So में you see, if you listen to this katha again and again, or that you speak this जब katha ऐसा again and लगता है तो ये again, प्रसंग सुनने की कितनी you इच्छा will होती है always be समुद्र successful मंथन कथा एक बार और in सुने all your activities, in all the labor and क्योंकि hard इस work. प्रसंग में तीसरे
that you put in. So don't you think you'll be inspired to listen to this katha again and again, or to speak about this katha again and again? You see, Lord Krishna is referred as Uttam Shloka because by way of Uttam Shlokas, his glory has been described. And hence, Lord Krishna is described as Uttam Shloka. So his glory has been mentioned by highly elevated people. And you see, what does the fourth line say? If you listen to this katha, if you speak this katha, all the unnecessary hard work one is required to put in. You see, the labor like donkeys that you would be performing, it gets completely eliminated. Or one can say, the fruitless labor that one gets engaged in is always eliminated if one gets to engage himself in listening to this katha or speaking about this katha. Now, if I was to ask you, what is that fruitless labor that one is required to perform? And what is it? One is grief. You get distanced from people whom you love. You see, performing physical labor is not a big deal for humans, but yes, emotional it is. And then it is moha or desire or attraction. But if one listens to this katha or if one utters this katha, then one gets freed of shok, grief, and moha, temptation. Adi Devik, Adi Bhaudik, and Adi Adhyatmik. The problems that you get by way of demigods, or by way of people, or by way of your own heart. These are all considered as fruitless labor. And the churning of the cosmic ocean story gets you freed from all this. And finally, in the fourth line, it is said that समस्त संसार परिभ्रम अपहम, मतलब इस संसार में जो परिभ्रमण है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे the fourth line that says that taking birth again and again and further dying again and again in the cycle of Jara Mrityu, Jan Mrityu Jara Vyadhi, one gets on to get liberated from the endless cycle of births and death, sufferings, etc. So this churning of the cosmic ocean is so significant that it goes on to gives prosperity to our job, our business. It does not become fruitless, rather offers us fruits. We get freed of endless labor that one is required to perform. So let us now enter into the katha of churning of the cosmic ocean. You see, in the churning of the cosmic ocean, let us understand the avatars, the incarnations of the Lord. You see, churning of the cosmic ocean is mentioned in the 8th canto, where Shukdev Goswami goes on to mention Manvantar Katha. You see the Manvantar which is going on as of now. It is the 7th Manvantar which is going on. The 7th Manvantar of the 50th year of Lord Brahma.
तो अभी सातवां, करंटली सातवां मनवंतर है। इसके पहले चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र का उद्धार किया। Fourth Manvantara, Lord took the incarnation of, फिर पांचवें मनवंतर में राजा रैवत मनु बने and थे, in the fifth Manvantara, और उस पांचवें Raja Raivat मनवंतर में became भगवान ने विभु Manu, नामक and अवतार Lord लिया took और the वैकुंठ की incarnation of स्थापना की। Vibhu and he established Vaikuntha फिर in the fifth छठवें Manvantara. मनवंतर में, In the मतलब sixth अभी सातवां Manvantara, चल रहा है ना, इसके पहले वाला, जस्ट that is इसके just पहले the वाला previous one. जो छठा मनवंतर था, In the उस sixth भगवान के Manvantara, राजा थे चाक्षुष, the इसलिए उस king was छठे मनवंतर का नाम रख Chakshus. गया चाक्षुष मनवंतर। Hence, it is called as और Chakshus उस छठे मनवंतर Manvantara. में इंद्र थे मंत्रद्युम्न, And Indra was और उस छठे Mantradyumna. मनवंतर में जो भगवान का अवतार हुआ, And the incarnation of उसका the नाम Lord था in the अजित। sixth Manvantara was Ajit. और उस भगवान अजित ने And देवता that Lord लोगों के Ajit द्वारा समुद्र मंथन कराया। got on to ये मेरे get माथे the के churning ऊपर जो of the बैठा है ना, वो Kush, पर्वत के ऊपर churning of the भगवान cosmic ocean विष्णु, performed. एक्चुअली उनका नाम है अजीत। So छठे this मनवंतर में ये Lord भगवान Vishnu, का who is sitting at the मनवंतर का top अवतार of this mountain, ये अजीत। is ओके, Ajit. फिर छठे के बाद अभी सातवां, करंटली सातवां And मनवंतर है। currently that we are in seventh तो ये Manvantara, इसके पहले वाले मनवंतर की जस्ट घटना है। so इसके this पहले churning of वाले the cosmic मनवंतर में, ocean is छठे just मनवंतर में the चाक्षुष story मनवंतर में of the previous Manvantara, the sixth अजीत नामक Manvantara, अवतार धारण where किया था। Lord Vishnu took the और अजीत incarnation अवतार of Ajit. लेकर भगवान And by ने way of विभु Ajit और Avatar, दानवों से मिलकर समुद्र Lord मंथन कराया। got on to get the churning of the cosmic तो उस ocean भगवान performed. अजीत के विषय में कहते हैं, So such Lord Ajit भगवान has been mentioned ये that भगवान विष्णु का ही अवतार है। it is one of the अजीत। incarnation of तो Lord भगवान Vishnu. विष्णु अजीत It is ने said that इस समुद्र Bhagwan मंथन Vishnu में Ajit, जितना पक्षपात किया, the उतना kind नहीं of किया। partiality मतलब भगवान Lord ने Vishnu अपने Ajit सीमा did रेखा in this मर्यादा सब particular पार कर दी। context जैसे of यीशु churning of the जी बोलते cosmic हैं ocean, भगवत गीता में, he अरे crossed all the limits of समोहम partiality. सर्वभूतेषु। वो हमारे पुराने जमाने में Otherwise, you see, Lord, रेडियो में वो आकाशवाणी you से see ये how much आकाशवाणी है। हम सुबह सुबह does रेडियो he में portray विद्वान बात as करते थे और फिर नहीं बोलते थे, morally वैसे highly भगवान बिल्कुल placed. जेन्युइनली, अर्जुन समो अहम, So Lord says to Arjun सम हूँ, that I am placed मेरे बिना similarly कोई अपने towards को all. नहीं पराया है। I am not वही भगवान placed राम favorably में in क्या favor कह of गए, some or placed सब against प्रभु somebody else. मम सब And उपजाया, same Lord, सब when he पर took the तुम incarnation of Lord Ram, what did he say? सब लोग मेरे प्रिय हैं, सबके That प्रति मेरा all प्रेम है। are dear to मेरे me. लिए I मेरे have लिए love towards everyone. It's not भगवान that राम ने भी I डंका love बजाया, a सब few and that I hate कृष्ण ने भी a few बजाया। others. The जब same was चौथे done by Lord अवतार में Krishna. मिले ना, But in this सारी particular समता बिखर incarnation, गई। Raja आप Ajit, समुद्र he मंथन broke प्रसंग में all the देखिए, neutral stands भगवान ने जितना and he पक्षपात इस performed प्रसंग में किया all the भक्तों का, partialities in favor of his उतना कहीं devotees. नहीं किया। Nowhere else in भगवान any of मोर the पंख धारण incarnation करते ना, it मोर is पंख, मोर का visible. कवच, तो भगवान ने इस लीला में वो मोर पंख को बिल्कुल सार्थक कर दिया कि नहीं, मैं पक्षपाती ही हूँ। So Lord actually wears the feather of peacock, and that established that definitely he is partially placed in favor of the demigods. जो मूल मूल पॉइंट है मैं आपको बताऊं, तो भगवान जानते थे So you see, Lord was already aware of the fact that whenever there will be churning of the cosmic ocean, and when Vasuki snake would be made to churn the Mandar Parvat, and what would happen, Vasuki will emit strong heat and fire, and whosoever would stand near to the face of Vasuki, they would actually burn very badly. So Raja Ajit or Lord Ajit knew that you see, these asurs would always copy the demigods. So Raja Ajit went on to indicate to
the Dev that, okay, come and come towards the face of Vasuki. Now, as expected, the Asuras reacted that how lowly have we placed that we would hold the lower part of Vasuki. No, we would catch hold of the upper portion of Vasuki. And Lord Ajit said, okay, fine. You catch hold of the upper part of Vasuki towards the head, and the Devta, that is demigods, got hold of the tail part. So as the churning started, as such, Asuras were black, and they further became jet black as Vasuki would emit strong fire and heat. And this is the reason a special pranam is offered to Lord Ajay, who went on to take special favors of his devotees. The Lord who engages into partiality. This has been mentioned in the form of a beautiful shloka, which you can see at the bottom of your screens. So the shloka goes like this, through which pranam is being offered to the Lord, Lord Ajit. O Lord, we offer our humble obeisances to you. We offer humble obeisances to the Lord who has taken favors and sides of his devotees. The Lord who can never be attained by asat people. Untrue people can never attain the Lord. We offer our humble obeisance to such a Lord who can never be attained by untrue people. Further, it is said, who can attain your lotus feet? Somebody who is full of bhav, feelings of devotion, whose heart is full of devotional service. Only such devotees can go on to attain your lotus feet. Further, the shloka goes on to say, O Lord, the demigods. So, O Lord, the demigods who had taken a refuge at your lotus feet, who had surrendered themselves to you, and you made them drink the elixir. So the meaning is, O Lord, what do you not do towards those who surrender unto your lotus feet? O Lord, you took the incarnation of Mohini only to support your devotees. You went on to attract the Asuras, but also you went on to attract Lord Shiva. I offer my humble obeisances to such a Lord. And finally, the shloka says, the Lord who fulfills all the desires of those who surrender at his lotus feet, I offer my humble obeisances unto such a Lord. I offer my obeisances repeatedly to such a Lord. This is how the Lord is offered obeisances in the churning of the cosmic ocean. Let us now try to draw some practical inspirations from this context of churning of the cosmic ocean. Indra was heard a curse by Rishi Durvasa and he lost heaven. And now to regain it, Indra went to the Lord and he was advised that must you do friendship with Asuras
and get to churn the ocean from where elixir would come, and you have that elixir. Now Indra was doubtful why at all would Asuras help me get the elixir, to which Lord said, you just perform the task and you leave upon the responsibility of giving the nectar, the elixir to you. So Mandar Parvat was made the churning rod, and Vasuki was made the churning rope, and all the demigods on one side and the asuras on the other started turning of the ocean. Let us now try to talk about the 14 gems or the ratnas which emerged from the ocean. First of all came the wish, then came the Kamdenu, then Uchishava horse, then the Aravat elephant. Fifth was Kaustubmani, followed by Parijat tree. Then the seventh was Rambha, etc. Then came Goddess Lakshmi. Then came Varuni, alcohol. Then came the moon. Then the Panchjanya conch. Then the Dhanush. Then Lord Dhanvantari. And the 14th was nectar or elixir. So this is how 14 gems emerged out of the churning of the cosmic ocean. But you see, our acharyas went on to provide us and indicate towards us valuable practical learning and education from these 14 gems. You see, in this world, if there was the biggest industrial activity, it was the churning of the cosmic ocean. So just as the cosmic ocean was churned, similarly must be engaged in churning our soul, that is self-understanding and self-assessment, and with that we must perform our activities. So the lesson that we must understand is, if at all we would go on to assess and contemplate upon our own selves, or let's say if you're pursuing some material task, whatever work that you might be doing, one must engage in self-thought process. So from self-thought process or self-thinking, what would be the first outcome? It would be poison or halahal. And until you digest this poison or halahal, the second gem won't emerge. Ideally, it is seen that persons do not drink this halahal or wish in material life, and hence they do not get the second gem or the second outcome. So ideally, the situation is that you must accept all the 13 gems one after the other, only then you can get elixir or the nectar. So dear devotees, please understand, be it material or any spiritual activity, the first outcome shall always be poison. And what is that poison? It is discredit, it is humiliation, it is criticism and sarcasm that you will face in this world. You see, my life has really experienced that whenever I have tried to accomplish something big, the first outcome is poison, that is humiliation, disgust, and insult by the people around you. You establish a particular shop, and the first people to criticize you would be your own neighbors. Whenever you go on to perform a good deed or a task, you will very often attract such criticism. जो कुछ करेगा उसके बारे में दुनिया बोलेगी। So sometimes we criticize, for example, our Prime Minister,
So as CM of Gujarat, you see, there were so many people who would criticize him. And when he became the prime minister, the number of those who criticize him also increased in number. इस निंदा, इस अपयश, इस विष के घूंट को आपने पी लिया तो Just in दूसरा रत्न case, मिलेगा, if you will कामधेनु tolerate गाय. this discredit and this blame, then the second gem that you would get is the Kamdenu guy. रत्न की सीख जीवन में So one must try to कि जब आप imbibe भौतिक the यात्रा, मैं बार learnings, बार the कहूंगा, lessons जब भी learned आप कुछ करना from चाहते the हैं तो churning सबसे of the पहले cosmic ocean अपने and the आप को 14 gems that सावधान emerge करिए out of कि churning of आपको ये the करना ocean, चाहिए, ये cosmic क्या करने ocean. वाला है, हम भी देखेंगे क्या करेंगे, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन इस विष को आप पी जाइए. So you see, ignoring everybody's sarcasm and criticism, one must drink the poison. So the second gem is the Kamdenu guy. So this Kamdenu guy is nothing but Pratibha, that is talent. So your talent will increase once you get the second gem, that is Kamdenu. You see, this actually means God. It means what? You will get an opportunity to deliver the world around you. You'll get many options and choices. Now it is completely into your own hands how you would use this opportunity. So the second gem was Kamdenu Gai, and once accepted comes the third gem, which was Uচ্চশ্রবয় horse, a horse which can also fly in the skies. So the opportunity that you have been given, if you start performing, then for sure, whatever your willpower or your resolutions are, it will get a lot of support. And with the speed of a rocket now, you can go on to perform whatever you want. And in case you can handle the Utteshava horse and you start engaging in enterprising activities, then the fourth gem is Elephant Eravat. So what does that mean? That completely ignoring day in and day out, and as a horse you were galloping, the next gem that you get is Eravat elephant, which reflects what? That your talent and your aura be known to everywhere. It will be acknowledged by everywhere. So you see, the fourth one is that your merit goes on to reach far and wide. This is the fourth. You might have seen that people assemble together to see the elephant. You see, your quality, your talent is showcased like an elephant, which is Airavat. When an elephant enters a village, everyone feels happy, but there is one entity which is very, very sad. Can you guess what is that one entity? So you see, the world might be very happy due to your talents, but there would be one type of people who would be very, very sad, and those are dogs. You see, dogs become very much in pain while looking at the elephant and they start barking. You see, I have observed it very closely and minutely. You see, a dog cannot dare to bark standing ahead of the elephant. Whosoever dog barks, can only bark at the back of the elephant. They can't dare come in the front of elephant. And you see, elephant cares the least about these barking dogs, and he keeps on only moving. And the dogs remain in the same village while the elephant has traveled from one to the second to the third village, and he progresses to different villages. But you see, the dogs do not have the capacity to move beyond a village. And once the elephant has left, you see, perhaps the dogs would engage in conversation. Look, how did I bark? Was it good enough for sure?
So this fourth gem is Airavat elephant. स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा जो होता है ना, वो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा। So a king is worshipped in his own country, पूज्यते, but विद्वान the को intelligent is विद्वान माना worshipped जाता है। everywhere in the world. लेकिन ये हाथी दुनिया में पूजा जाए, ये कुत्तों से बर्दाश्त नहीं होता। हाँ? But you see, this elephant ये being छोटे worshipped छोटे throughout छोटे the जानवर world सब जो है ना, अपनी is संस्थाओं में भी not नहीं पूजे जाते। tolerated विद्वान and को देखते हैं, उसकी गरिमा को by देखते these हैं, such तो small dogs, भौंके बिना रह नहीं सकते। आपकी and they आंखों से cannot, you see, stay back, हाथी hold की back, तरह seeing at the अपने talent चालों of को नहीं रोका। a talented भौंकते भौंकते person. को भौंकने And दिया, just in वो बारीकी से case, चलते if you रहे, do not तो stop खोजो by, just आपको like कौस्तुभ मणि, आपके the सिर पर ताज लग जाएगा। elephant, then the fifth आपके gem सिर that पर you would get हैं? would be भगवान Kaustubh मुकुट पहनते money, हैं। जो 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 कौस्तुभ the, मणि the, the भगवान अपने Kaustubh दिल money में रखते हैं, which Lord आपके keeps सिर पर, close to his heart मतलब दुनिया would में be आपका placed सम्मान शुरू in हो the जाएगा, crown on your head. आपका सत्कार What शुरू does हो it mean? जाएगा कि You आपने will गति be नहीं रोकी है, regarded and आप अपनी गति respected से चलते throughout the रहे, world because you have not गति affected your नहीं speed, रोकी। your मुझे movement, your progress. वैसे मैं इतना बड़ा ग्रंथ बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिक धरातल पर हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी थोड़ा सा नीचे का है। So, you see, because we are in this materialistic world, I want to give a very तो shallow वो example जमाना of this हुआ material करता था world. भारत के माननीय सचिन तेंदुलकर का। You see, there was a time of आपने Sachin देखा होगा इंदिरा Tendulkar. जी के जीवन में You लोग see, कितना in the प्यार मोहब्बत lives करते of थे, गाली देते this थे, कुछ Sachin भी करते थे, Tendulkar, लेकिन ये बंदा come एकदम what ठंडा। किसी wrong, भी गाली दी, come what कभी bad, the विरोध people किया, might speak about him, क्योंकि but he स्त्री never पर बाण reacted. नहीं बोलती He थी, never चिल्ला annoyed. बोलता था। He would never हमें get annoyed इतना because he ठंडा, would not बोले speak, चिल्लाए but कुछ भी what करे, would speak? हमें His उसको action, जवाब अपने his वाणी से bad would नहीं, speak. अपने कर्म से देना We है। should not get the stimulus हमारी and वाणी react नहीं by बोलनी way चाहिए, of our हमारे कर्म words. बोलने चाहिए। Rather, it should be लेकिन our अब दुनिया वाले karmas, it कहाँ should be our कहाँ जवाब efforts, देने it should be जाओगे, our actions which should आपके be कर्म बोलने speaking for चाहिए। और यदि ourselves. कर्म बोलते रहे And और once कर्म करते our रहे, actions keep on तो speaking, पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि then मिलेगा, you see, भगवान Kaustubh अपने money सिर is पर what you ताज would get लगाएंगे। as the next gem. और Lord जब will आपने पचा लिया, place देखो जहां कहीं भी the अपच crown होगा on your वहीं head. प्रगति रुक जाएगी, लेकिन इसे भी आपने पचा लिया तो And in चकाचक case you're able चलेगा। to पारिजात tolerate this, वृक्ष, digest this, then the next gem that you will be पारिजात get ऐसा ऐसा is कल्प the वृक्ष, Parijat tree. जिसको It's a आप जो भी kalp tree. संकल्प करोगे ना, Whatever shall you वो सारा desire, रत्न आपके सामने whatever प्रस्तुत shall हो you take a जाएगा। resolution of, it will be आपका जो presented. सत्य It will संकल्प present है, itself उसे right प्रस्तुत before करने के you. जितने भी साधन हैं, All your वो सब प्रस्तुत resolutions करने that you मानो might उससे मिलने लगेंगे। just arrive at, सारी and it shall समीक्षा be उससे होने fructified लगेगी। by लेकिन फिर एक this परीक्षा होगी Kalpavriksha. आपकी कि But पारिजात still, वृक्ष के you would बाद be put सातवां to रत्न some कौन सा जो निकला? tests. The रंभा next आदि gem अप्सरा। is the nymph like ये परीक्षा Ramba, आएगी etc. अप्सराएं। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। फिर आपने जैसे ये रंभादि अप्सरा जो ना वासना का प्रतीक है। You see, these names like Ramba, etc., are nothing but representation of, लेकिन उसकी वासना कैसी थी? दूसरों you का सुख, see, that's it। दूसरों Vasna. का अपना माल बनाने की भावना। So basically, it is लेकिन about इसे भी आपने पचा लिया trying to beget what others own. तो फिर Just in case आठवां if you're रत्न able to समुद्र से निकला, overcome it, then the लक्ष्मी eighth जी। gem that you shall get आपको is धन शक्ति Goddess सामर्थ्य की Lakshmi, कोई who कमी would नहीं give है। you all लक्ष्मी धन prosperity. का प्रतीक है। Lakshmi is the और जब symbol आठवां of रत्न the आपको wealth. भरपूर लक्ष्मी मिल And गई once you तो get फिर the और eighth क्या? Ratna, वारुणी then मदी one more मदिरा नवमा examination रत्न। would be भाई आपका Varuni, अभी मन alcohol, का मद नहीं होना चाहिए। because you लक्ष्मी should ने देखा not लक्ष्मी get जी के हाथ proud में of मत मदिरा निकली। the wealth or the उसको मद money. होने का And प्रतीक just क्या after था? Lakshmi, दौलत था, it ऐश्वर्य was था, the यश था। alcohol, because you might get intoxicated लेकिन जो because of खानदानी the आदि है ना, wealth. But you उसे see, a कभी person अपना who comes from गर्व a नहीं होता। strong किसी कवि ने बड़ा family, सुंदर he कहा would था, never be जो proud of खानदानी such रईस है shallow वो achievements. मिजाज नर्म रखते हैं अपना। गौर फरमाइए, जो खानदानी रईस है
वो मिजाज नर्म रखते हैं अपना, तुम्हारा तो लहजा ही बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। हैं? ये ज्यादा उछलने वाले, फुदकने वाले उसके लहजे से ही पता चल जाता है कि ये सब नया नया है। बाकी जो खानदानी रईस होते हैं, खानदानी भक्त, खानदानी ज्ञानी, जिसकी खानदानी होती है, उसे पचा You see, लेते हैं। those who have अपने धन, अपने been सुख, quite सामर्थ्य, ऐश्वर्य deep का, in devotion भक्ति का would उपयोग not be moved by some or the other ऐसे पचा लेते impulses. हैं तो 10वां रत्न निकला, And then the 10th gem that you would get would be moon. जो है ना शीतल बन जाता है। And you see, with this, the nature of such a person becomes फिर उसका quite जीवन परम शीतल calm, स्वभाव से, composed. His उसके life धर्म becomes very, very calm and composed. His nature and behavior goes very, very calm. One would experience a lot of pleasure in his company. And once you're able to digest it, the 11th gem that you would get is Panchjanya Conch. It means what declaration? Your glory would reach all the directions. You will not make an effort. You will not work hard, or you would not labor to do that happen. You would only engage in doing your acts, but then your glory would reach all the directions like a punch, janya, shankhnad. But again, examination would happen here also. At this time, the 12th gem is the bow, that is symbolic of pride. But in case you stay by the principles and values, if you do not leave the basic foundation of yours, then you would get the next gem, and that shall be Lord Dhanvantari. So you will evolve over all desires. You see, Dhanvantari has cure of all the possible diseases, meaning to say at this stage, you will have solutions to everybody who would come to you. You would be in a position to offer treatment to anyone who comes to you. And in this manner, you will go on to paropkar, good for the others, and then by doing this continuously, you will get the 14th gem, which is the nectar or the elixir. So it's like you get a gem, we have to digest it, we have to accept it, and not be starting to move with a cushion of air around us. And only then we would get the next gem. Now, where you are placed is ideally gonna be your lookout, and you should move ahead to beget these 14 gems. So time is running up. We will bring a close to this day's katha today. I thank each one of you who have spent such valuable time of yours. Special thanks to Manika Mataji from Melbourne, Australia, and from UK, Rumaroy Mataji, who have organized this beautiful katha in the memory of the departed souls and ancestors of your family. You have presented us an opportunity to perform this katha and an opportunity for others to listen to this katha. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srimad Bhagavatam. Hare